है बर्तमान करंट नहीं तथापि लैपटॉप रू आज क्लास सो गला थर आमे माने डिस्कस करिथिलु सुबह जाउछि कि रिप्लाई दियंतु तो आपण माने के ओके आपण माने के वीडियो ऑन करि रखंतु काहे लिस्ट देखा जाउनी डिस्प्ले होनी so you can anybody can open the video those who get the sufficient net okay so book of Daniel already we have studied ambe mane already sikhi asichu ebong sikhuchu isn't it already we have discussed book of Daniel as the prophetical book Daniel pustako gote major prophetical books boli kwa jauchi jota ki the prophetical history of Gentiles world far from the reign of Nebuchadnezzar to the coming of Christ eta jota ki refer kora jaithila gote Nebuchadnezzar to coming of Christ mane राजांको तारु माने राजांको स्टार्ट रो तापर जोडा कि सेकंड कमिंग इथि रेफर करा जायछि जोडा कि डानियल पुस्तक रे सेटा आबे माने सिखि कि आसुछु देन ऑलमोस्ट वी हैव स्टडीड होला ऑप्शन तो डिस्कस कर ओके बाय द वे आंबे माने भलोरे नेट नथिबा जुग पुणी तरे आंबे माने गॉड्स कंट्रोल ऑफ nations of the world आंबे माने आरंभ करिबा जोडा कि चैप्टर 2 to 7 चैप्टर आंबे माने इठु आरंभ करिबा ओके सो समय माने केते दिन एले मध्ये किछि असुविधा नै बट वी हैव टू लर्न ब्रीफली एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड आपण माने मध्ये बुझिबा को पड़ो सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2 to 7 माने 2 अध्याय रु 7 अध्याय मध्ये रे कौन लिखा जायछि गॉड्स कंट्रोल ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बोली जोडा कि हम मान देखि पारु ओके इन रेस्पॉन्स टू unexpressed desire on the part of Nebuchadnezzar जोडा कि cannot express his desire to the people निजरो इच्छा को नेबुकदनेस्सर गोटे राजा तार निजर इच्छा को जन को जणे पारुनी सेमितिका गोटे घटना आमे माने देखि पारु इ कैनॉट अनएक्सप्रेस डिजायर सेटा कहउचंती आमे माने गोटे निजर इच्छा जन को आमे माने कहि पारु ठीक से प्रकार घटना नेबुकदनेस्सर को जीवन रे घटिछि जोटा कि आमे माने एठारे स्पष्ट भाव देखुछु कोन तांकर ड्रीम मेन पॉइंट कोन ड्रीम सो ड्रीम that is the very important God gave him a dream gute darshan deichi parameshwar which has interpreted by Daniel jaha ki Daniel ko द्वारा तर्जमा करा जाइथिला gave the monarch a relation of the rise and progress and the fall of Gentile world power during that period described by the Christ as the time of the Gentiles आम माने बुझी पारुछु ऑलरेडी गलातर लुक 21 अध्याय 26 पद मध्ये पठन करिछु द जीसस वाज द डिस्क्राइब as the time of the Gentiles so that was the we can say एठारे जोटा कि दर्शन परमेश्वर देइथिले से विषय गोटे दानियल कोन कोन बोली तर्जमा करथिले कोन कोन बोली व्याख्या करथिले ट्रांसलेशन करथिले सो वी हैव टू स्टडी नाउ अमने इन द टाइम ऑफ जेंटाइल्स माने विजाति माने को टाइम रे कोन एथिला सो रेफर्स टू दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच वर्ल्ड डोमिनियन इज इन द हैंड्स ऑफ द जेंटाइल इंस्टेड ऑफ ज्यूस जिहुदी मानकर अस्थरे न थाए विजाति मानक अस्थरे जोडा कि सेई टाइम रे माने डोमिनियन करथिले से माने गोटे डोमिनियन करथिले से माने गोटे
कोन शासन करिबानी This period began with the captivity in the day of the 606 BC. माने 606 BC रे कोन गुटे captivity आरंभ हैला, capturing the country and completely capturing and taking in the hands of the Gentiles. माने बिजाति मानकर अस्थरे से माने नहीं थिले जुड़ा कि आमे मान देखुछु. It was not responsible of the Jews, माने जिहुदी माननको अस्थरे किछि रखा जाय नथिला, से मानकर अस्थरे से माने कैप्चर करिनेला. Will end with the second coming of Christ. एडा कोन second coming माने जिसुंकर द्वितीय आगमन रे एटा शेषो होई पारिबो कि. So that's what we see. Even you can see here, आपण मन देखि पारिबे Daniel clearly तर्जमा करूची जहा कि राजा नेबुकदनेस्सर जो दर्शन देखिथिले परमेश्वर जहा किछि देखैथिले किंतु तोडं गबां कितुंगन इतिंति अपसुजेतिन आगनम तेलिगन आतनालमतलिगन सेटा जोटा कि दानिएल स्पष्ट भावरे तर्जमा करिथिबा माने we can clarify here माने जुटे एठारे आरंभ करचुकुडी कोन तारो तर्जमा. ओके तर्जमा विषय गला तो already we have discussed many things. Daniel 2 अध्याय 31 पद. ओके एठारे लिखा जायछि you o king speaks and behold a great image. This great image whose brightness was excellent stood before thee and the form thereof was terrible. एटा ऑलरेडी आपण माने पठन करि साले तथापि पठन करंतु के जदि पाई छंती प्लीज रीड इट. जदि पाई छंती पठन करंतु 2 अध्याय 21 2 पर्व 21 पठन करिबा. आओ से काल ओ ऋतु परिवर्तन करंती, से राजगण को पदच्युत करंती ओ राजगण को पदस्थ करंती, से ज्ञानी मानकु ज्ञान ओ बुद्धिमंत मानकु विवेचना दियंती. 2 अध्याय दानिएल 2 अध्याय 31 पद. ओके पठन करिबा. हे महाराज आपण देखो देखो एक प्रकांड प्रतिमा देखिले, अति विक्रमी ओ अतिशय तेजो विशिष्ट से प्रतिमा आपणक सम्मुखरे ठिया हैला ओ तहिर दृश्य भयंकर थिला. तहिर दृश्यटा भयंकर थिला. So which is God shown to the king, माने राजा को जो दर्शन परमेश्वर देखैथिले, that was the horrible, that was the terrible, that which is the statue, good statue परमेश्वर देखैथिले. तडंगमांकित ना बॉय कोन स्टैच्यू ताको स्पष्ट भाबरे दर्शन माध्यमरे देखैथिले. ओके सो दैट इज द क्लियर इमेज और क्लियर पिक्चर्स दैट व्हाट माने जोडा कि राजा देखिथिले एवं दानिएल जो एक्सप्लेनेशन करू अछंती एवं कंटिन्यूएशन 32 मध्ये पठन करंतु 32 पद. से प्रतिमार मस्तक शुद्ध सुवर्णमय, ताहार बक्ष ओ बाहु रौप्यमय, ताहार उदर ओ जंग पितलमय. पितलमय. सो यू कैन सी आपण मन देखि पारु छंती जोडा के कंप्लीट पिक्चर इज गिवन. दिस इमेज हेड वाज द फाइन गोल्ड, माने तार मस्तक कोन प्योर गोल्ड माने प्योर सोना रे बना जाईछि, and his breast and his arms of silver and his belly and his thighs of brass. So these are the we are clearly seeing here. Even 33 पद मध्ये पठन करंतु. ताहार चरण लौहमय ओ ताहार पादर किछि अंश लौहमय, किछि मूर्तिकामय थिला. His leg of iron, his feet part of the iron and part of the clay. So kichit अंश एडे आमे माने कंप्लीटली देखि पारुछ. ओके 33 एडा होछि कोन जोटा कि
तांकर दर्शन रे परमेश्वर देखैथिले ओके सो दिस इज द ड्रीम God sent to the king Nebuchadnezzar okay already आमे माने गला थरो डिस्कस करिछु वर्तमान आमे माने जस्ट रिविजन करूछु एटा so what I'm saying that meaning माने परमेश्वर जुडा के देखैथिले सेरा बुझी पारनथिले so finally Daniel was called to the describe what he saw माने Daniel को डखा जायथिला कोन से देखिथिले सेटा डिस्क्राइब करबा पाए से विषय बुझेइबा पाए so that's what we can see here then 34 रे कोन लिखा जायछि just 34 35 पठन करंतु आपण निरीक्षण करू करू शेषरे हस्त बिना छेदित एक प्रस्तर सेई प्रतिमार लौह ओ मूर्तिकामय पादको आघात करी खंड खंड करी भांगी पकाइला एतिरे लौह मूर्तिका पित्तल रूपा ओ सुना एक संगरे खंड खंड होई भंगा गला आउ ग्रीष्मकालीन खଳାର तुष परी हेला आउ वायु से सबको उड़ाई नहीं गला ओ से सबुर पाई आउ स्थान मिलिला नाही पुणी सेई प्रतिमा को आघात कला जो प्रस्तर ता बड़ी एक महापर्वत हेला आउ समुदाय पृथ्वी के परिपूर्ण कला समुदाय पृथ्वी की परिपूर्ण कला then that image became a great mountain and filled the whole earth so ethi जोटा कि गुटे आबे माने मूर्ति देखुछु ना कि एई मूर्ति सहित कोन समुदाय पृथ्वी को कोन कला it became a great mountain like a great mountain माने गुटे प्रस्तर बहुत बड़ो माउंटेन बड़े देखा जाइतला okay and filled the all heaven it was the filled with all heaven माने पूरा पूरा पृथ्वी रे परिपूर्ण हेला okay so that is the one symbol that God shown to him okay এটা হচ্ছে একটা symbol এটা আমি মানে the succession of world empire was set forth under the figure of the image and composed of various metals আমি মানে যেটা কি গুটে গুটে মেটালস রে বনা যাইছি এটা আমি মানে গুটে গুটে এক্সপ্লেনেশন মধ্যে দেখি পারি ওকে so that was the various metals was used गुटे गुटे metals रे कोन यूज करा जाइतिला आमे मान देखिछु मस्त करे गुटे प्योर सोना सहित बना जाइतिला okay so that is the it was the we may see the okay of the world empire and relation their character of the government एबे एबे वर्तमान आमे मान देखुछु विभिन्न प्रकार विभिन्न जगह रे वर्तमान रो जुग देखिले कोन गुटे गुटे राज्य रो गुटे गुटे देश रो गुटे with the country with empire it was given the empire means कोन गुटे राज्य गुटे राजत्व गुटे देश सहित connection the relationship the following is the interpretation of Nebuchadnezzar dream okay following तार स्वप्न रो केमिति explanation करा जायछि आमे माने वर्तमान एठारे देखि पाछु okay look at everybody listen the egg of gold symbolize जुड़ा कि मस्तकर सुना को गोटे दर्शा जायछि कोन बाबिलोन the empire of Nebuchadnezzar जुड़ा कि निजरो नेबुकदनेस्सर राज्य निजरो देश को दर्शा जायथिला egg of gold जुड़ा कि बाबिलोन देश को दर्शा जायछि okay that is the BC 606 to 538 को दर्शा जायछि okay then next second point कोन लिखा जायछि the breast and arms of silver represented the empire of the Medes and Persians एडा होछि जोडा कि 538 BC रु 338 BC पर्यंत एडा को इंटरप्रेट करा जायछि जोडा कि चेस्ट ऑफ सिल्वर मेडो पर्सिया बोली कहू
मेडो फेर्सिया माने दीटा देश सहित जुड़ित जोड़ा कि करा जाइछिला मेडेस एंड फेर्सियन जोड़ा कि शॉर्ट फॉर्म रे हम माने कहि परिबा गोटे मेडो फेर्सिया बोली कहि परिबा व्हिच वाज inferior to the Babylonian जोटा कि गोटे बाबिलोनियन सहित कनेक्शन थिबा गोटे देश ओके देन थर्ड वन इज तृतीय कोन the lesser value of the belly and type of brass typified the Grecian Empire माने ग्रीस देशर देश सहित गोटे ग्रीस देश को दर्शा जाइथिला 330 BC to 30 BC ओके 30 BC पर्यंत सेटा को गोटे दर्शा जाइछि दिस एम्पायर वाज लेटर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एई मानंको 4 पार्ट्स रे डिवाइड करा जाइतला चारि भाग रे विभक्त करा जाइतला 7 अध्याय 6 पद पठन कर केते भाग रे विभक्त हैला 7 6 पद पठन हे उत्तर मु देखिली देख चिता भाग सदृश आ गोटे पशु ताहार पिठीरे पक्षीर चारि डेणा थिला मध्य से पशुर चारि मस्तक थिला आउ ताहाको कर्तृत्व दिया गला ताहाको कर्तृत्व दिया गला एठारे चारिटा ओके जस्ट इमेजिन अग्निर के जाइबा एउतारे मु देखिली देख चित्ता बाग सदृश आउ गुठिए पशु थिला देयर वाज ए वन बीस्ट लाइक ए टाइगर ओके तारो पिठीरे केतोटी डेणा थिला चारोटी डेणा थिला मध्य से पशुर चारि मस्तक थिला चारोटी मस्तक थिला ओके इठी आबे मान देखु ओके आबे मान को भारत रे कोन रावण रो मुंड केतरा थिला 10टा थिला बट वी कैन सी हियर चारोटी डेणा चारोटी मस्तक जस्ट इमेजिन अपन मान जस्ट इमेजिन करंतु गोटे चारोटी डेणा चारोटी मस्तक रो पशु केमिति थि जस्ट इमेजिनेशन अपन मान को इमेजिनेशन अनुसार केमिति रहले give some imagination and this is as a assignment eta gote assignment boli babantu but give a imagination and give me explanation about this okay ei पशु विषय रे आपण माने एक्सप्लेन करी कि मते सेंड करंतु जोटा कि असाइनमेंट होची ओवर ओके सो इठी आबे माने कोन देखुछु चारुटी डेणा थिला एठी कोन चारुटी माने एई परे कोन चारुटी भाग रे विभक्त करा जाईची legs of iron means Rome and the feet of iron and clay is the Europe country and stone is the statue in the pit apoy arengan ku murti na dong alai gatare na te seda hochi Jesus Christ and the church seda hochi Jesus Christ ko bisoy ebong church ranupuna mele kalama auri 8 अध्याय 8 पद पठन करंतु कोन लेखा जायछि पठन करिबा ए उत्तर से चाग आपणार अतिशय बड़ाई प्रकाश कला ओ से बड़बान थिला बेले ताहार बृहत श्रृंग भग्न हेला आउ तहिर परिवर्तरे आकाशर चतुर्दिग आड़े चारि विलक्षण श्रृंग उत्पन्न हेला विलक्षण श्रृंग उत्पन्न हेला एठी तारो माने जत्ते बेडे विभक्त हेला जत्ते बेडे डिवाइड हे गला डिवाइड एला पर तारो कोन श्रृंग उत्पन्न हेला प्रिय भाई बोडी माने आंबे माने जत्ते बेडे नजर करूछु गुटे 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 इंसिडेंट नाकि गुटे इंसिडेंट आपण माने मने मने पडुथिबो बेटा the great CM was there in Andhra Pradesh सेडा होची YS रेड्डी जेते बेडे तारो गोटे मृत्यु घटिथिला केते लोक माने तारो फैंस माने थिले से माने समस्त केते कोड रैली करी एई करी आंध्रा रु तेलंगाना विभक्त करा सो दैट इंसिडेंट मेड the Hyderabad that incident made the Andhra Pradesh to become a two part
two parts. Just imagine. Here, ଏଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ later this empire was ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ରାଜତ୍ବ ଏଇ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶର ରାଜାର ଶାସନକୁ ମାନେ ସେଇ ଦେଶର ଗୋଟେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି then we can see here the next one okay next one ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ the legs of the iron and the feet of the toys of the fat clay and the fat iron indicate the Roman Empire from 30 BC to until the return of Christ. এইটা হচ্ছে যেটা কি the feet of leg and this is indicate the Roman Empire from BC 30 মানে 30 BC খ্রিস্ট পূর্বରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଷୟଟା ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଏଇ ବିଷୟଟା ଦର୍ଶାଯାଉଛି the two legs symbolize the eastern and western parts of which of the empire was divided which empire was divided ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କି କୁଆଡେ କଲେଜରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି the western country and eastern country western world and eastern world western world ku କୋଡା କୋଡା ku ମହାଦେଶକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି anybody can tell western world I'm not talking the western country I'm talking just to western world कुकु महादेशକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି western or eastern we are staying in India ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛୁ ଭାରତରେ ଅଛୁ so ଭାରତରେ ଥାଇ କି ନାହିଁ କି eastern countries or western countries ନାଇଁ କି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଇ କି ଗୋଟେ western ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେରିକା USA and North America South America. So these are the, we can say that Western world. But Eastern world, when we calculate, that is Australia and New Zealand, and this all those countries will join the as a Eastern world. Okay, we are the middle. So which is we are in Asia continent. Okay, Asia continent. So এইটা হচ্ছে ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଥିବା ଯୋଗୁ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେତେଟା ବିଭକ୍ତର ଭାଗ ମାନେ ଦୁଇଟି ଗଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି western part and eastern part empire was divided okay just imagine then 10 toys signify ई गलची आउंडरजी गंजी गुटे कौन सिग्निफाई करूची that in the last days the empire will be divided into 10 parts अतने खुलेगा कौन हबो 10 भागरे विभक्त कराजिबो 10 भागरे विभक्त करा जोटा की end of the world ବୋଲି ଆମେ ମାନେ okay then we can see here the many scholars see the fulfillment of this in the European economic community often called the common market जोटा की এই पिक्चर आमे मन देखला परे पार्लियामेंट को मने पडुची आ विभिन्न स्थान रे जोटा की gathering the people making like a some function and a shopping mall and isn't it ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା ଯୋଉଟା କି କେତେଟା ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଯାଇଛି 10ଟା ମାନେ 10ଟି ଦେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଇଟାଲୀ वेस्ट जर्मनी and the Netherlands and Belgium and France and United Kingdom
and Luxembourg and Denmark, Ireland and Greece. So these are the 10 countries are united and they have an open common market where they have to discuss about the each country. So this is very clear pictures that you can see. Then now here the stone stood without ends, falling at the feet of the image. Typhias, mane eta ku gote dorsa jaichi kono the coming of Christ at the time when the Roman Empire will have been restored. Roman Empire ku restore korajibo, when it have been restored, then that day the coming of Christ, second coming mane dutyo agamano arambo obo. परमेश्वर सदाप्रभु जीशुंकर कोन गुटिए द्वितीय आगमन आरंभ एवं when the time was Roman Empire been, okay. The next one, the destruction of the image and the growth of the stone indicate the destruction of Gentiles, the world power, and establishing of Christ's kingdom. एटा जोड़ा कि परिशेषरे कोन जेतेबेले परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करूछंती, जेतेबेले द्वितीय आगमन सरला परे there will be the kingdom only one only one माने गुटिया kingdom रहबो सेटा होची Christ kingdom. So that will establish when the power of the world end, जेतेबेले पृथ्वीर शक्ति किबा पृथ्वीर राजा शासन सरी जीव से समय में कि कौन होबो that will end, and also we can say that Christ kingdom will be built and Christ kingdom will establish in the during the time of the second coming completed. Okay. Now chapter 3 we are going to discuss the chapter chapter 3 आरको प्रवेश करिबा. Okay. 3 अध्याय एक पद पठन करंतु. राजा नबुकदनेस्सर 60 हाथ उच्च और 6 हाथ प्रस्थ एक सुवर्णमय प्रतिमा निर्माण कला. बाबिल प्रदेशर दुरा नामक पदारे से स्थापन कला. को जागार नामक दुरा नामक सेठी कोन कला से स्थापन कला. He built आपण मा देखुचंती कि okay, Nebuchadnezzar the king made the image of gold whose height was 60 cubits and the breadth was thereof 6 cubits, and he set it off in the plain of the Dura. The Stanor Namoji Dura, there was a plain area in the province of Babylon. In the province of Babylon. एडा होची आमे माने स्पष्ट भाव देखुचु जोडा कि तृतीय चैप्टर ना कि कामटा आरंभ कला. मूर्ति रो माने गुटे स्टैच्यू रो कामटा आरंभ कला. Okay, just imagine the 3 Jews, God's fearing man, तीनोटी Jews जो माने परमेश्वर को भय करते इन देखुचु. Almost every Sunday school students is well accurate with the story of the deliverance of the 3 Hebrew children from the Nebuchadnezzar fiery furnace and recorded in the chapter 3. आपण माने भलो भाबे जानि थिबे एवं सानरो माने जन्मरो जते बेले इथिंग हम तो गरजांग बाले तगल तक जानि जगह गाते जोडा कि इंग्लिश रे कहउछन्ती संडे स्कूल. So from there you can understand that there is a 3 people, okay, 3 people, those who were rescued from the fire. Nebuchadnezzar was put them in the fire, but God rescued and परमेश्वर सेमानको उद्धार कले. So that is you can see here 3 Jews God fearing माने जिहुदी माने 3 जण थिले.
से माने कोन परमेश्वर को भय कले ओके सो परमेश्वर को भय कले सो दैट इज वी कैन सी आमे माने एठारे स्पष्ट भाबरे दे वर थ्रोन इनटू द furnace because they refuse to bow to the king's image. However, God's miraculously delivered them. एमानंकु गुटिए तिनि जनंकु तिनि व्यक्ति मानंकु गुटिए अग्नि रे पखागला काहे कि they refuse to bow down before the king's image. माने गुटे राजार मूर्तिर सामना रे से माने प्रणाम करिबा पाई से माने मना करिबा एतु से मानंकु कोडी पखागला अग्नि रे पखागला but God miraculously माने परमेश्वर सेमानंकु डिलीवरी कले सेमानंकु उद्धार कले the where the destruction okay from their God delivers them सेटा उची आमे मन देखु then here chapter 4 रे गुटे आ अद्भुत गुटे बड़ जंतु गुटे पशु आमे सेटा उची chapter 4 is deal with Nebuchadnezzar insanity and recovery एडा उची तार गुटे तार आमे मन देखुछु एक चारि अध्याय एक पद पठन करंतु कोन लेखा जाय छै समुदाय पृथ्वी निवासी जाबतीय गोष्ठी देशीय ओ भाषावादी लोकमानंक प्रति नबखो निश्चर राजार विज्ञापन तुम मानकर बाहुल्य रूपे शांति हो so lastly we can see that recovery of the Nebuchadnezzar so deals with how to deal एडा उची आमे माने स्पष्ट भाबलो so here the vision and the dream fulfill in the where chapter 4 verse 28 to 37 एडी चारि अध्याय 28 पथरु 37 पद पर्यंत तांकर स्वप्न तांकर दर्शनर fulfillment आमे माने देखु ओके पृथ्वी चार so that is the great things we can see here सेडा उची आमे माने इठी आमे माने देखु कोन Daniel personal story under the Belshazzar and Darius is covered in the chapter 5 and 6 इठी आमे माने तारो पर्सनल विषय रे पर्सनल स्टोरी विषय रे कोटु कोटे लेखा जाय छी 5 अध्याय रु 6 अध्याय पर्यंत लेखा जाय छी आमे माने देखुछु अंडर द बेलशेजर हाउ Daniel was okay chapter 5 माने 5 अध्याय also contain the story of the fall of the Belshazzar and the Babylonian Empire, including account of the writing on the world. Writing on the wall. It is Belshazzar विषय मध्य आमे माने एठार देखि पारुछु जोटा कि कांतरे लेखा जाइतिला परमेश्वर कांतरे लेखितिले नेबुकदनेस्सर को गोटे दर्शन माध्यम रे देखाइ देले किंतु इति बेलशेजर पाखरे कोन देखुचंती कांतरे लेखि कि देखुचंती the meaning which is written that nobody understood जो meaning सिट लेखा गला से माने बुझी पारि नथिले okay so that is the Daniel was used to explain इठी Daniel को मध्ये यूज करा जाइतिला कोन सेई कांतरे कोन लेखा गला सेई विषय को एक्सप्लेन करिबा पई तार अर्थ बुझिबा पई से समय रे डिक्शनरी नथिला बेसिना उड़िया अभिधान अछि हां उड़िया अभिधान अछि तापर डिक्शनरी इंग्लिश टू उड़िया अछि जदि कोन हमें माने कष्ट पाउछु जदि कोन बुझी पारुनो वी विल लुक द डिक्शनरी or either we will read the English Bible and Uriya Bible and Saura Bible we will read to understand the meaning what is that like so एठारे कोन very interesting matter Daniel 5 अध्याय 25 पद पठन करंतु पुणी जहा लिखित एला ता हे मिने मिने तकेल उपारसिन एठी कोन ओके एठी कोन लिखित एला मेने मेने तेकेल ऊपर सिन that is the mention there but
Belshazzar did not understand. Belshazzar kono buji pari nothile seta kono lekha gola. Okay, so now we are going to study each meaning. Okay, 26 ରେ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇ ମିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? God had numbered thy kingdom and finished it. ପରମେଶ୍ୱର ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। So that is the meaning of mene. The next one 27 ର tekel ର meaning କଣ? ତକେଲ ଆପଣ ନିକ୍ତିରେ ତौला ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ଉଣା ଦେଖା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ହଁ, ନିକ୍ତିରେ ତौला ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଉଣା ପଡ଼ିଅଛ। God weighted you in balance and heart thou wanting. ଉଣା ପଡ଼ିଅଛ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ କେବେ କେବେ ମୋରେ ମୁଁ ତ କେବେ କୋର୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। There is a some balancing waiting is that ସେଟାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କାଣ୍ଟା ବୋଲି ତौला ଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ। So there is what is a rule for everyone and law for everyone, isn't it? So according to the deeds, there will be enough sufficient. What punishment is there? Punishment is there. Sometimes people are thinking that when I was reading one book, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପଢୁଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କଣ? Jail is not a punishment. Jail is the people can ସେମାନେ କଣ ଲେଖା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଙ୍ଗାଲେ ବୋମରା aboy krojosung yeretin anin alumetin anado baran engale imdamtin puna selabo ikute krojosung mane ଗୋଟେ jail ବନା ଯାଇଛି। So why I'm saying this is there is the law and balancing the ourself. ଯଦି ଉଣା ପଡି ଅଛି sometime there may be lot of problem. According to this our deeds the problems will arise in our life. Okay, so time okay, again 5 minutes. So here we can see that 28 report 28 Peres ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକ ମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? Your kingdom is divided and given to the Medes and Persia. ଆପଣଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ କୁ ଡିଭାଇଡ କରିକି କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ମେଡେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପେର୍ସିଆ ମାନେ ମେଡୋ ପେର୍ସିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। So that is the meaning. So you can understand here ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ and ଆଉ 29 ରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? 29 ରେ ସେତେବେଳେ ବେଲଶାଜର ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ ଓ ସେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ। So when Daniel explained or interpreted that what is written in the word, because those time there was no dictionary. ସେ ସମୟରେ କୌଣସି dictionary ନଥିଲା। Exactly, because to know the meaning, how difficult to know the meaning those time, isn't it? Just imagine ଆପଣ ମାନେ imagine କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ then how would be your life, right? So that we can understand. ଏଠି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ କଣ? Daniel's deliverance from the den of lions and his advertisements are recorded in chapter 6. ଆମେ ମାନେ ଏଠାରେ କଣ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଡାନିଏଲଙ୍କୁ ଡେଲିଭର୍ସ କରାଯାଏ। ଡାନିଏଲଙ୍କୁ କୋଠରୁ ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ସ ଦ ଡେନ୍ସ ଅଫ ଲାୟନ୍ସ
सेठु डेलीवर करा जायतिला जोडा कि चैप्टर 6 रे हम माने वर्तमान देखि पारु दानियल 6:13 पढंतु 6 अध्याय 13 पद पठन करो तहिरे सेमाने राजा छामुरे उत्तर करी कहिले हे महाराज निर्वासित जियोदी संतानगण मध्यरे जणे जे दानियल से आपणको कियबा आपणको स्वाक्षरित निषेध पत्र को मान्य करे नहीं मात्र दिन मध्यरे 3 थर प्रार्थना करे हाँ दिन मध्यरे 3 थर प्रार्थना करे से एक्चुअली जते प्रार्थना करूथिला गुटे माने जरका खुली कि जेरूशलेम आड़ो को मुह करके प्रार्थना कर सो ही वाज प्रे दिन को 3 थर प्रार्थना कर सो ही वाज प्रेइंग देन जते प्रार्थना करूथिला जिति कि हम भाषा रे हमर गाउडिया भाषा रे कोन कुची चुगली करूथिबा लोक मा ए जापो कानी खुनी आगाम ते जामराजी डाकुली से माने राजांको निकट को जाइकी आ एंगाले 6 को 9 उल्टे देले 9 होबो ठीक सही प्रकार सिद्धि कथा गुडा को राजा को जणैथिले जणैबा कारण राजा कोन कोले आउ आगो पछ चिंता न करी आगो चिंता न करी देखंतु पिक्चर देखंतु आगो पछ चिंता न करी दानियल को कोडी पखा गला सिंहर गुंफा भीतर को पखा गला ओके सिर पठन करंतु 6 अध्याय 22 पद कोन कहउछंती मोर परमेश्वर आपणा दूत पठाई सिंह मानक मुख बंद करियछंती ओ सेमाने मोर 21 रो आरंभ कर 21 रो आरंभ करी कि 23 पर्यंत पठन करंतु तहिरे दानियल राजा को कहिले हे महाराज चिरजीवी हेउंतु मोर परमेश्वर आपणा दूत पठाई सिंह मानक मुख बंद करियछंती ओ सेमाने मोर क्षति करि नाहंती कारण ताहांको चामुरे मोर निर्दोषता देखागला पुणी हे महाराज मु आपणको साक्षातरे ही कौनसी क्षति करि नाही तहिरे राजा अतिशय आनंदित हुई दानियलଙ୍କୁ गर्तରୁ उठाई आनिबाकू आज्ञा देला तो दानियल गर्तରୁ उठा गले ओ तांको शरीରରେ कौनसी प्रकार क्षत देखा नगला कारण से आपणा परमेश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करिथिले हाँ जेते बेडे दानियल गुंफा भितरु बाहर को आनिले आंगत बाइरा नमदुंगा जी तार शरीर रे कौनसी किछिटा दाग भी नथिला इ जापो आंगत आंगत रामेंगजी गुलाहें जरे ना बोई चिन्ह रहतो इ जापो इति गाम तो गोटे चिन्ह रहतो किंतु इति दानियल को शरीर रे कौनसी दाग नथि कि कौनसी तार वस्त्र रे मध्य सिंह मानकर गोटे लाड़ भी नथिला ए जापो लाड़ भी नथिला जदि आम्भे माने 24-25 पद पठन करबा सेठी राजा काहाकू पठेतिले तापर सेकेंड तर सिंहर गुंफा भितर काहाकू पठेतिले आम्भे माने भल्लरे बुझी पारे पठन करंतु अनंतर राजा आज्ञा करन्ते लोक माने दानियलंकर अपवादकारी माननको आनी सेमाननको सेमानकर बाड़क ओ सेमानकर स्त्री माननको सिंह मानक गर्तरे पकेइले पुणी सेमाने गर्तर सिंह मानकर गर्तरे पकेइले बास एतिकी एतिकी इठी कोन लेखा जायछि जो माने परमे माने जो माने दानियलंक विषय रे राजांक निकट कले राजांक निकट रे कोन कहउथिले इथि काम तुबी कानी खुनी गाम लोपड़ी सेमानंको सेमानंकर संतान मानंको एवं सेमानंको स्त्री मानंको समस्तंको सिंहर गर्भरे पखा गले देखंतु केते गुटे विषय आंगा तांगा तगडी ताई दानियलंको सिंह माने न खाइबा न माने स्मेल न करिबारो गुटे कारण दे हैड ए ग्रेट प्रॉफिट हां जस्ट इमेजिन लॉजिकली जेतरा हम माने बाबू छु लॉजिकली आना तो ओकडी तबी दानियल गुटे गुटे मनुष्य पखा गला बट सिंह कड़े जी न्यू जी केन्यामा जी देन दे गॉट द मोर पीपल टू ईट जस्ट इमेजिन एडाउ जी सेमानकर माने परमेश्वर केमिति लोक मानको पठेले सेमानकर बुझन करे बाबा दैट इज द ग्रेट थिंग्स दिस इज जस्ट इमेजिन
तेणु करी प्रिय भाई भौणी माने दिस सेंटेंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट आम्भे माने जदि जन को आम माने कष्ट करूछु कष्ट दउछु ताहेले आम्भ मानक जीवन रे मध्य डबल गुण तार परिणाम आसीबो एटा 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 जस्ट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड किए भी आपण मान को कष्ट दियंतु कि आपण माने कष्ट पांतु जस्ट स्टे एज अ पेशेंस and you will get the result in the upcoming days. Okay, so next one we will hear the vision of the four beasts. Okay, इथे आउ गुटे कोन दर्शन एटा जोटा के the vision of the four beasts माने चारोटी जंतु मानक विषय रे कोन दर्शन एई विषय रे नेक्स्ट क्लास रे हम माने डिस्कस करिबा. ओके, हम माने नेक्स्ट क्लास रे कोन डिस्कस करिबा the vision दर्शन about the चारोटी जंतु मानक विषय जोटा कि चैप्टर 7 रे लिखा जाय छै सेठी सिठु हम माने आगो को बढ़िबा. ओके, थैंक यू. Over to Ost.